Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur, and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode, we have with us Aarti Malhotra. This episode is about her son, Arvey. Arvey jumped to his death almost 6 months ago in February, and now she's demanding justice for him. Aarti says the reason for his untimely and tragic death was continuous bullying at school over his sexuality. She alleges, despite complaints to the authorities, the matter fell on deaf ears. Welcome, Aarti, in today's episode. Thank you, dear. Thank you so much for calling me here. What was your relationship like with Arvey? We shared a very good bond with each other. We were like friends. He was like my friend also, son, brother. Like he was dealing like a father to me also sometime. So we shared a very good bond with each other. And then suddenly we came across with something which he has, hided. It's not about we've shared a good bond and children always will share you everything. Actually, he loved me a lot, so that's why to over care, he said, "Ki no, mama, if mama will know how mama will think, mama will be tense." So he has hidden many things. इस बात से दुख होता होगा आपको? बहुत ज़्यादा. वो टर्निंग पॉइंट क्या रही है आरती आरवी की जिंदगी में? Actually, first of all, let me tell you about me. I'm a teacher. I'm an art teacher. I'm a mother of wonderful boy, Arvey. He was a very lovely, very sweet boy, very innocent, very joyful to everybody. He was doing drawing, poetry, singing. Like in his class, when he was doing making the jewelry art and other kind of art, so children, they started bully him. He was a very handsome boy. Despite those special talent, he was the most popular child among the school in his class. When he was in class 6, his classmate labeled him gay, spread rumors about his sexuality. In fact, he was blindfolded and asked to strip in the washroom. They have they have physically abused him, and he was mentally, physically traumatized by those events. When people calling you gay and all, and they come to the physical abuse, so that trauma, that mental, physically, he was traumatized completely. Eventually, this pushed him into depression, and he ended his life in February 2022. आरती जिन्होंने आरवी को ब्लाइंड फोल्ड किया और उसको स्ट्रिप किया उन सब बच्चों के साथ आई एम श्योर द स्कूल अथॉरिटीज हैव टेकन दिस इनटू अकाउंट एंड दे हैव बीन गिवन देयर ड्यू पनिशमेंट. Actually, I have sent it emails, many verbal complaints I have done to school for my son. At the one hand, I was struggling with his mental health and other things. I'm a single parent. We are three sisters. My father is on dialysis, so I have lots of responsibility. At the other hand, but one hand I was handling son and his these thing. School has not taken any action. They have replied me after a 1 month that those children have no role to our school. They have left in COVID time. Actually, this has happened with my child in class 8, ninth. Regularly these events were happening, and he has hidden it. So when COVID came, so nobody knows like these students where they are. So the school got chance to hide them, and make wrong dossiers. Everything has been changed. Police is taking time now. It has been 8 months and no action has been taken yet. So they have given ample time to school to change, do any kind of sort of changes at school level. They got enough time to hide everything. So the children have been vanished. I don't know how come. So my son was waiting for like anybody should take action. We were having a very good bond with the school. I have spent 10 years. The son has spent 10 years. Even 2 minute prayer they have not hold it for the son. When he was here, then they have not listened us. And when the child has left us for heaven, I really feel very pity on them. They didn't get chance to do prayer for the pure soul. They have not done it yet.
आरती, ये लीगल बैटल जो आपने डिसाइड किया था लेने के लिए, यू स्टार्टेड दिस होल लीगल बैटल, ये कब शुरुआत हुई आपकी? और ये जर्नी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी आसान नहीं है आपके लिए, और काफ़ी कठिनाइयों से आपको निकलना पड़ता है। तो व्हेन डिड यू टेक दिस डिसीजन टू टेक ऑन अ लीगल बैटल? जब जिस दिन आरवी गया, एक्चुअली फर्स्ट आई हैव गिवन फुल चांस टू द स्कूल कि स्कूल खुद इंटरनली चीज़ें कुछ कर ले। बीइंग इनटू कोर्ट एंड ऑल ना, आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड, व्हेन आरवी वाज 4 month old, that time I got divorced, and I have experienced about lawyers, court and police a lot that time. तो आई वाज अफ्रेड कि अरे यार, ये तो फिर से कुछ नहीं होने वाला है, कितना भी भाग लो, पुलिस ने भी पैसे खा जाने हैं, सबने पैसा खा जाना है, कुछ नहीं होगा। So let's try to trust my school and the authorities, they might take action. I was waiting, calling them to do this. आरवी के जाने के बाद ही मैंने इसके ऊपर डिसीजंस, तब मैं नहीं रुक पाई, क्योंकि पहले एक एम्प्लॉई के हाथ बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था बोलने के लिए, माँ का भी बंधा हुआ था। आई वॉज वर्किंग एट सेम स्कूल, तो मैं वहाँ एम्प्लॉय थी 10 साल से, तो आई कांट स्पीक दैट मच इन फ्रंट ऑफ देम। अब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ खो दिया है, ना मेरे आगे ना पीछे, अब मेरे को कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। अब मैंने ये सोचा कि नहीं, अब तो मैं नहीं इनको छोड़ सकती, अब ये माँ नहीं छोड़ेगी। एम्प्लॉय ने बहुत तरस खाया है स्कूल पर, स्कूल का नाम, चीज़ें ना खराब हो। बट जब इन्होंने मेरे बच्चे को ही मार डाला, ही हैज़ रिटन ऑन हिज सुसाइड नोट, इफ यू गो थ्रू विद हिज सुसाइड नोट, ही हैज़ मेंशन्ड इट दैट स्कूल, ही हैज़ नेम्ड वन टीचर एंड प्रिंसिपल का नाम उसने लिख कर के स्क्रिबल कर दिया है, एंड ही हैज़ रिटन द स्कूल अथॉरिटीज, बिकॉज ऑफ देम आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव, they have killed me, especially he has written they have killed me, ma'am, how can I leave them? So that time I took an action, I have told to all media and everybody कि ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ। और जब मैंने ये अवेयरनेस के लिए, आई एम ऑन मिशन अबाउट रेजिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी, and I'm looking forward, to you guys also to speak about this all, क्योंकि it's like very common these days, बहुत easily लिया जाता है बुलिंग, हर बात को किसी को चिढ़ाना, there is no kindness, equality नहीं है। एक नेल पेंट लगाने के पीछे बच्चे को इतना हरास कर दिया गया स्कूल के टीचर्स ने, मैं क्या-क्या बताऊँ, इफ आई टेल यू ना माय जर्नी टिल नाउ। अभी तक भी सेम स्कूल के टीचर्स आरवी के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं कि हाँ, गलती उसकी थी, नेल पेंट वो लगाता था, तो बोलेंगे ही ना दूसरे। मीन्स वी हैव नो राइट टू लिव। सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को ही पढ़ाना, इन बड़े-बड़े एजुकेशनिस्ट जो स्कूल्स खोल के बैठे हैं होटल जैसे, उनको पहले पढ़ना ज़रूरी है। Rather decorating their school and premises, taking awards. What awards they are collecting? They are failure. उनके स्कूल का एक बच्चा ऐसे चला जाता है और लिख करके चला जाता है। आपको पता है सुसाइड नोट लास्ट में जो बच्चा लिख के गया है, वो ऐसे ही नहीं लिखा होगा ना उसने। So there is a lot, and still his mother is asking and seeking for justice. It has been 8 months now. I'm running here and there to different officials, home minister, home secretary, police official, CP office, here there. Like it's like कि मैंने ही खोया और मुझे ही भागना है, because I cannot bribe them. So when I've started this campaign, ma'am, so I got to know कि पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी में इतने सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आरवी के जाने के बाद तो जैसे ना बरसात हो गई, इतनी बरसात बच्चों के मैसेजेस की, दे आर सीकिंग जस्टिस फॉर देम ऑल्सो। बच्चे पता है क्या देख रहे हैं आरवी के केस में, वो अपना केस देख रहे हैं और वो मुझे बताते हैं, मैम आई हैव बीन sexually abused by my own teacher, my own family member. I'm still getting bullied by my peers, my friends, my teachers. इतने सारे messages हैं, I can share with anybody is, wanted to hear it, wanted to come forward to help in this cause. I can share it. And if no time to see it, just please go through my profile on Instagram and you will find the comments which I'm getting from the students. This is only giving me energy
and support to work for all children. Arvey has gone, but I don't want any other child to go like this and to suffer like this. So that's how I have started my journey to take an action and working on this mission. I hear you, Aarti, and I think this podcast should reach out to all parents who often don't know how to handle emotional challenges that sometimes children face. Also, with suicide, what happens is that we are caught with many, many emotions that come in. What is it that you'd like to share with our listeners? About sometimes people have anger, sometimes people are guilty. What are the kind of measures that one needs to take when one needs to overcome a loss at this magnitude? First, I would like to share, like, being a educator, being a teacher at same school, my efforts, went in vain. Sometimes, when we are working at any organization and when we believe them, when we trust them, I think we should not do that much totally. We should first take an action for our own child. Child should be our first priority. That guilt I have. And the kids, those who have bullied, I think school should have taken action. We should teach our students good touch, bad touch, so we are teaching, but this is not enough. We should have conversation about sex, sexuality, gender with our student, with our children. We should not wait like कि कोई और बताएगा तो हम अपने बच्चे को बताएंगे. We should talk about, I think after 10 year of age we should start talking about this to our children, so that children need to have a role model as well as value of equality, kindness, that we should include in our education. Having school program that foster empathy, emotional intelligence is also really important, but very rare people are working on it. You're a brave heart to be able to come onto so many platforms and talk about this and create awareness. So आपको शायद बहुत सारे लोग ये सवाल करते होंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, तो आप क्या जवाब देते हो उन लोगों को? मैं फील क्या करती हूँ, एक माँ का दिल तो बहुत अच्छे से समझता है, जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे से समझते हैं। बट ये फीलिंग एक अलग ही है। मेरा बेटा ना मुझे एक ऐसी जर्नी से बांध गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे छोड़ गया है इस समाज में ये सब बुराई को ख़त्म करने के लिए, कि माँ, जो प्यार आपने मुझे दिया है ना, सिर्फ़ मेरे तक के लिए सीमित मत रखो, पूरे दुनिया में बाँटो इसको, और बहुत ऐसे और बच्चों को आपको बचाने की ज़रूरत है, जो मेरे जैसे और मेरे से भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए जी रही हूँ, उन बच्चों के लिए जी रही हूँ, जो आज भी इतनी ज़्यादा परेशानियों में जूझ रहे हैं और मुझे बताते हैं। मेरे पास दिन में 2 या 3 कॉल्स ऐसे आ जाते हैं, "मैम, आई एम सफरिंग, मैम, आई नीड योर हेल्प, कैन आई टॉक टू यू?" एंड दे शेयर देयर हार्ट टू मी। और मैं ऐसे-ऐसे बच्चे आपको बताऊँगी, जो 3-4 बच्चे ऐसे जो बिल्कुल सुसाइड करने वाले थे, एंड दे कॉल्ड मी अप। मैम, अच्छा हुआ, भगवान से मैं प्रेयर कर रहा था, हाँ, थैंक यू, आपने फ़ोन उठा लिया एंड यू हैव सेव्ड माय लाइफ। एंड एंड हम 1-1 घंटा बात करते हैं और उसके बाद वो बच्चा खुश है, वो बच्चे अपनी फैमिली में एडजस्ट हो गए, उनके पेरेंट्स से भी मैं बात करती हूँ। तो मेरा बेटा ना मुझे इस सेवा में लगा के गया है, व्हिच आई एम डूइंग फॉर सोसाइटी, और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं मैं अपने बेटे का ही काम पूरा कर रही हूँ। तो मेरी फीलिंग्स अब पहले से अभी बहुत अलग हो चुकी है। मैं 3 महीने तो पूरा रोई, 4 महीने मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, कैसे जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आए नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में भी कि मेरी लाइफ़ भी किसी काम की नहीं है, मैंने क्या करना है। देन मेरा बेटा ड्रीम्स में आता है और जब मैं उसके सपने और सब रिकॉल करती हूँ, तो मुझे बोलता है कि नहीं मम्मा, यू हैव टू वर्क अ लॉट, यू आर देयर एंड you can't do this. And I'm standing for him and standing for children like him, those who are still struggling and suffering. The society should understand the feeling of children, the schools should understand, even the colleges, the workplaces. I don't want कि ये चीज़ दोबारा हो किसी और के साथ. I don't want this happen to any other child, any other parent should go, जो जिस चीज़ से मैं जा रही हूँ, जिस सिचुएशन से मैं निकली हूँ। और सच बता रही हूँ, मेरे इस मिशन से, इस अवेयरनेस को स्टार्ट करने से मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बच्चों के थैंक यू के मैसेज आते हैं, आरवी को थैंक यू कर रहे हैं, मुझे थैंक यू कर रहे हैं। सेम स्कूल से कितने पेरेंट्स, कितने बच्चों के मैसेज आए कि मैम, आरवी तो चला गया पर आपका बेटा हमारे बच्चों के लिए लाइफ अच्छी करके चला गया है।
क्योंकि आरवी के जाने के बाद बुलिंग के पोस्टर लग रहे हैं सेम स्कूल में, वर्कशॉप्स हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। सोशल मीडिया के लिए बहुत काम उन्होंने शुरू कर दिया कि दिखाना, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट इंटरनली तो करो ना, दिल से करो, उसको एक्सेप्ट करो। पहले कहाँ थे आप? ये चीज़ पहले हो गई होती तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। तो माय सन हैज़ गिवन मी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके ड्रीम भी थे, ही वांटेड टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। मुझे बोलता था, रूम पेंट करता था, मम्मा यू नो व्हाई आई एम पेंटिंग दिस रूम, पता है वीडियो मैं यूट्यूबर बनने वाला हूँ, इन्फ्लुएंसर ना, तो मेरा रूम बहुत सुंदर लगना चाहिए। जैसा मेरे साथ हुआ, जो मैंने सफ़र किया, आई डोंट वांट कि कोई और बच्चा इस चीज़ से निकले। और जितनी मुश्किलों से मैंने निकल के अपने आप को संभाला है, मैं आई जस्ट वांटेड टू सेव अदर चिल्ड्रन एंड अदर किड्स। सेम डियर, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। अगर मेरे इस मिशन से, इस हेल्प से किसी बच्चे को मैं बचा पाऊँ, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी सौभाग्य की, खुशकिस्मती की कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता है एक बच्चे को खोने का दर्द होता क्या है, और एक सिंगल पेरेंट के लिए लाइक मेरी तो दुनिया ही उजाड़ दी। किलर्स के नाम लिख के गया है। आई डोंट नो वो कैसे जीते होंगे, कैसे उठते होंगे। बट आज मुझे बहुत बच्चे माँ बुलाते हैं। मेरा फ़ोन मैसेजेस से माँ के भरा होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे ने ही इन सबको भेजा है मेरे लिए धरती पर, कि मेरी माँ तो अकेली नहीं रह पाएगी, जाओ मेरी मम्मा को तुम सँभालो, और मेरी मम्मा तुम सबको सँभाल सकती है। सो आई एम डूइंग दिस जॉब, एंड हाउ आई फील, I've shared my journey till now, but it's not easy to get justice here in India. आरती, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आप से परमिशन लेके मैं जो आखिरी चिट्ठी आपको that Arvey wrote to you, may I read this out for the listeners? Yeah, thank you. Dear Mama, you're the best mom on this planet. I'm sorry, really sorry that I couldn't be more brave. This has killed me, especially higher authorities. Mamta Gupta and others, I can't live this hateful world. I tried my best to live, but it seems like life wanted something else. If I don't survive this, then please get yourself a new job. And I'm really blessed to have you in this birth. You did everything possible, but yes, I'm not strong, I'm weak, and I'm sorry. The society will say and tell you many things, but just don't hear or believe them. You are the best. You are amazing. Always remember that. Tell Ninna or Bade Papa about my sexuality and whatever happened with me, and please try to handle them. I know you're a warrior and you can do it. Please remember, you can do and achieve anything. You're wonderful, strong, beautiful, and amazing. Don't care what relatives say, they're all assholes. This was the last letter that Arvey wrote, and I get goosebumps as I'm reading this letter because my voice also shakes. As a mother of a single child, one can't even comprehend the loss. All I would say is this, that I hope, Aarti, justice is delivered to you. We often use the word commit suicide, which is such a wrong thing to say. Committing is a crime. Many children die with suicide. And often people are asked this question, how are you feeling? It is impossible to answer that question. When someone dies, suddenly you're left with an overwhelming jumble of feelings and thoughts. So, we explore some of the emotions for our listeners today with Aarti's podcast that you need to know if you are facing any sort of a loss in your life, that there will be anger, defensiveness, depression and anxiety, despair, disbelief, fear, guilt, numbness, physical reactions bhi honge, questioning honge, why, what if, why me? Rejection, belief, relief, sadness, searching, sense of acceptance, shame, shock, stigma, or khud ke bhi suicidal thoughts. But in sabko, after you listen to this podcast of Aarti, you will know that it requires a lot of strength, and only a mother like Aarti can do what she's doing. And this is for all our listeners here, that if you are going through a challenge with your child, please reach out. Reach out to the authorities in school on time, and please change your child's school without even thinking and without ever questioning your child when they come back to talk to you about a problem in school. I just wanted to thank an angel in my life who came. She's Ankita Mehra, who has supported this mission, this campaign. हमारे
Insta पर only I was having 200 followers. She took my interview like you did today. Maybe आज इस interview के बाद भी हम कहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाते हैं. That's a great help. Like you guys are like angel for me in my life for Arvey. तो like Ankita, she has supported and she came in my life. और उसके बाद से जर्नी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि आज महुआ तक भी आज मैं पहुंच पाई हूँ, अपनी बात बोल पा रही हूँ. तो you guys are really great help. So I'm just looking forward more help for awareness and for this mission and for Arvey's case. Please spread the words to the society. इस बच्चे के साथ जितना जुड़ सके, जितना हेल्प कर पाए. I just request you all to help in this. And thank you, Mohua. Thank you so much, Aarti, for being on today's episode. I wish you strength, lots and lots of love. And I'm hoping that this podcast will be reached across to many of our listeners that we have across the world, and help will come your way. Thank you, Mohua. Thank you. Thanks, Aarti. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mohua Show, where we talk ईमानदारी से.